Hey, what's up guys? Welcome back to another video for the High Word Cycle series. In this video, we're going to talk about the dreaded approach anxiety, the number one sticking point जो सबसे number one दिक्कत लोगों की होती है कि भाई क्षितिज सब ठीक है बट लड़की के पास जाते हैं उसमें फट जाती है हमारी दिमाग में। तो इतना लगता है यार ये बोल दूंगा वो बोल दूंगा ऐसे कर दूंगा, वीडियो देख के लगता है अप्रोच कर देंगे, बट जब असली में बात आती है ना अप्रोच एंग्जाइटी हो जाती है हमें। हम जाके बात करते हैं, हो ही नहीं पाती, फट जाती है, दिल की धड़कनें तेज, नर्वसनेस तेज, हाथ कांप रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट टू डू। So why does this exist? We're going to talk about that in this video. Welcome back to the video guys. This is another video in the High Word Cycle series and my name is Kshitij. I teach you guys about dating advice, personal development and how to build your dream lifestyle. In the High Word Cycle series, I'm going to help you guys build self-worth, have better relationships, be more confident, have better self-esteem and let go of all the fears on a much more deeper, more substantial level, on a more permanent level, alright, rather than just surface level stuff. Talking about approach anxiety, there are a couple of reasons why approach anxiety even exists in our realm right now. All right, we're going to start off with firstly covering evolutionary psychology. So going back in time, I want you guys to rewind, ऐसे करके rewind करके let's go back to the time when we were cavemen. So when we were cavemen ना, उस time पे ऐसा होता था, the only thing that a person had to do was survive and replicate, like on a very biological level. हमारा काम था कि भाई tribe में there needs to be food, bring food to the tribe as a man, bring food to the tribe and protect the tribe from like different tribes, दूसरे लोगों से, कोई और तुम्हारे tribe का खाना छीन रहा है उससे या wild animal से. It was all about survival value and on a genetic level, on a biological level, we wanted कि हमारे genes pass on होते रहें, तभी हमारी tribe survive कर पाएगी. एंड एट दैट टाइम अल्फा मेल्स होते थे जो सही में बाहर जाके फूड लेके आते थे ट्राइब के लिए. दे यूज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, दे यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ द कम्युनिटी, दे यूज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, दे यूज्ड टू बी द पीपल जिन पे पूरी ट्राइब रिलाई करती थी. तो उनके पास सबसे ज्यादा वैल्यू होता था और वो एकदम दबंग निडर लोग होते थे, बिकॉज दोज आर द क्वालिटीज यू नीडेड टू इवन go into the wild and hunt a wild animal and you got to be strong and fast and everything. तो अगर उस टाइम पे एक नॉर्मल सा बंदा जाके एक लड़की को अप्रोच करता है ट्राइब की या किसी और ट्राइब की बंदी से जाके बात करता है एंड दैट वुमन टर्न्स आउट टू बी द अल्फा मेल्स वाइफ और द अल्फा मेल सिस्टर और द अल्फा मेल मदर और डॉटर व्हाटएवर, और किसी और की ट्राइब में भी तुम अगर जा रहे हो एंड वहां पे यू अप्रोच समबडी एल्सेस डॉटर व्हाटएवर स्टफ, उसमें अगेन यू हैव अ फियर ऑफ बीइंग किल्ड बाय दैट ट्राइब और बाय दैट अल्फा मेल. वो आएगा, वो वैसे ही सबसे ज्यादा वैल्यू उसके पास है, वो घंटा तुम्हें भाव नहीं देगा, आएगा पकड़ेगा मारेगा तुम्हें, पेट में तुम्हारे भाला घोप दिया और तुम मर गए वहीं पे. कबीले का सरदार वाला जो कॉन्सेप्ट होता था पहले मूवीज में कि कबीले के सरदार की बेटी से जाके हीरो ने जाके बात कर लिया बॉलीवुड मूवीज में और बवाल मच गया है, पूरा कबीला पूरी ट्राइब आ गई है, फिर उसने सरदार को बचाया है, फिर दोस्ती यारी हो गई और फिर फाइनली सरदार बोलता है ले मेरी बिटिया ले जा तू. सो दोस कॉन्सेप्ट्स कम फ्रॉम द सेम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एंड व्हाई दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज बिकॉज इवन दो आवर जीन्स हैव सर्वाइव्ड, दैट मीन्स हम वो थे जो बच चुके हैं, हमारे जीन्स क्लियरली वर नॉट वीडेड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, बट एट द सेम टाइम in that on a genetic level the act of committing that crime or witnessing that crime, जो crime था पहले कुछ laws वगैरह घंटा कुछ नहीं होते थे, because on that criminal level वो fear हमारे दिमाग में हो गया था कि अगर हम जाके कुछ करेंगे तो ऐसा बुरा हो जाएगा हमारे साथ, and that passed on because that fear helped us survive. कि हम किसी और की वाइफ या बेटी या कहीं पे कुछ वी आर नॉट आउट ऑफ अ प्लेस, हमने गलत अप्रोच कर दी, किसी से बात कर ली, गलत लड़की गर्लफ्रेंड बन गई या वी क्रॉस अ बाउंड्रीज, वी माइट गेट किल्ड. सो फॉर अस टू सर्वाइव वी हैड टू बी अ लिटिल बिट कॉन्शियस ऑफ दैट एंड थोड़ा कॉशियस होकर हमें चलना पड़ रहा था. नाउ दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, बट वी हैव सर्वाइव्ड, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ अप्रोच एंग्जाइटी दैट वी हैड. देयर आर दीज टू थिंग्स व्हिच गो इन टैंडम विद ईच अदर. द फर्स्ट part being that you have approach anxiety so that it's a fear-based thing so that you don't get killed. But the second thing is the mere fact that you have survived, that means तुमने approach करी है. Your ancestors, your genetic line would have gone to another tribe or would have spoken to a girl and there would have been a battle to death हुआ होगा दोनों के बीच में, जैसे Black Panther में हो रहा था, battle to death for the woman, और उसमें भी तुम survive कर गए होगे. So that means you have taken the risk and you have gotten the girl. सो जनरली ये दोनों चीजें साथ में है, बट द थिंग बीइंग हमने फियर फेस करा है और हम फिर भी जाके लड़के हम लेके आए हैं लड़की अपने ट्राइब में. सो अभी भी यू हैव दैट पार्ट इनसाइड यू दैट कैन ओवरकम दैट जेनेटिक फियर व्हेन यू एनालाइज कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, तो तुम अभी भी स्टार्ट हो, व्हिच इज व्हाई योर जीन्स हैव सर्वाइव्ड. सो यू नो हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, यू नो हाउ टू ओवरकम दैट फियर ऑन अ जेनेटिक लेवल, यू नो हाउ टू गो अप टू समवन एंड यू नो इंस्टिंक्चुअली कि बात कैसे करनी है और क्या होता है, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल क्रीचर्स एनीवे. बट स्टिल दैट बीइंग सेड, it makes our life even more difficult to get over approach anxiety because of a couple more reasons. One of the reasons being the mainstream conditioning.
बिकॉज मेन स्ट्रीम कंडीशनिंग में क्या होता है ना, बचपन से ही we're growing up, we're looking at all these videos, we're looking at music videos, we're looking at movies, we're looking at the mainstream media, और आसपास हमारे लोग क्या बोल रहे होते हैं. So the information that we receive is, if you go and talk to a girl, भाई वो लड़की तुम्हारे मुंह पे ड्रिंक फेंक देगी. She will not like it, she will slap you, everyone around is gonna look at that, और सब हंस रहे होंगे तुम पे, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी. और अगर घर पे बात पता चल गई तो और भी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी. एट द सेम टाइम द एवोल्यूशनरी फियर दैट कोई उसका बॉयफ्रेंड या उसका डैड या कोई और उसके दोस्त आएंगे, दे विल फाइट यू. एंड ये म्यूजिक वीडियोस में और भी ज्यादा होता है. इसीलिए द सीरीज दैट आई मेड, डेटिंग कोच रिव्यूज, दैट इज टू शोकेस यू एंड टू टेल यू कि ये चीजें असली में इतनी नहीं होती हैं जितनी लोग सोचते हैं, बट ये हमारे दिमाग में डर बैठा देती हैं. द फियर ऑफ अप्रोचिंग, द अप्रोच एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं. दिस फियर दैट अ गाय इज गोना कम, हु इज गोना बीट यू अप, वो भी हमें अंदर ही अंदर दबाता रहता है. मूविंग ऑन, द थर्ड थिंग is the messages that we receive while growing up from our primary caregivers. Our primary caregivers being our parents, the mom, dad, and आसपास के environment में हमारे जो extended relatives. The messages that we receive is don't talk to strangers. If you're a boy, the messages you receive is don't talk to girls. नहीं. And there is this sense of awkwardness around talking to girls or having girls as friends, and you sense that, you know, when you talk to a girl, like your parents तुम्हें बात नहीं करने दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे, और if there are family friends there, they're not leaving you alone in a room कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी. And generally the messages are being given that अच्छे बच्चे लड़कियों से बात नहीं करते हैं, लड़कियों से दूर रहना है, ये लड़कियां तुम्हें बेच खाएंगी, लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं आजकल की, you know, that's the messages the mothers give कि लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई है बेटा, तू बहुत सीधा सा है, they'll take advantage of you. So if you receive those messages, you start to believe कि नहीं यार मुझे तो दूर रहना है लड़कियों से, अगर मैं लड़कियों से बात करूंगा तो मैं I will get cheated upon, या कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है लड़कियों से, लड़कियां शातिर होती हैं. And messages like you're a good boy if you stay away from girls, लड़कियों को दोस्त नहीं बनाते, शरीफ घर के लोग खाली लड़कों के साथ रहते हैं, ऐसी बातें. At the same time, when you're watching TV, any sexual thing comes on television, the sense of awkwardness is there. It's so hush-hush about sex in a society, and there's a lot of shaming around sex, around the opposite gender, and just in general, you know, जो भी romantic चीज़ें, non-platonic चीज़ें के आसपास बहुत सारी चीज़ वो shaming रहती है, which blocks you from accepting that part of yourself and acting on it. कि when you see a girl, तुम्हें वो जाके करना है, but you have that hesitation, that anxiety अंदर that is literally paralyzing you. And that's because when we're growing up, हमारे subconscious mind is getting formed, the beliefs are getting formed, the sense of self is getting formed. So the core belief that I'm a bad boy if I approach a girl, and वो गंदी नज़र से नहीं देखना है कभी, कि कभी भी if you're romantically interested in a girl, तुम्हारी नज़र गंदी ही है और तुम बुरे ही इंसान हो, और रोमांस और वो सारी चीज़ें शरीफ घर के लोग नहीं करते हैं. So generally, you will not want to go against what your parents are saying. No child wants to do something against the parents. Subconsciously I'm talking about. There's going to be a blind love, blind loyalty. And your core beliefs have already been formed. तो वो change करना बड़े होके काफ़ी मुश्किल हो जाता है consciously, because it's the work of the subconscious mind, जो हमें जहाँ पे जाके change करना पड़ेगा, which is not accessible directly. At the same time, if you're a girl, you might have grown up with messages being like stay away from boys. Boys only want one thing. अकेली लड़की खुली तिजोरी की जैसे होती है, ठीक है. लड़के बस तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहते हैं, लड़के बहुत बुरे होते हैं, लड़के तुम पे चीट करेंगे, अपने पापा को देखो मुझे मारते हैं, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, all men are the same. It's a bad society out there. At the same time, yeah, there's a lot of sexual shaming that happens for girls. The part that you cannot be sexual, कि तुम्हें अबला नारी बन के रहना है, तुम्हें सीधी लड़की बन के रहना है, सेक्स इज अ बैड थिंग, तुम्हें करना नहीं है. एंड सडनली they expect you to get married and be like, yeah, अब हमें बच्चे चाहिए, which is fucking crazy and which is bizarre, because when we grow up putting that sexual part of ourselves inside, putting that romantic part of ourselves that need to, you know, interact with the opposite gender down, अगर हम उसको इतना दबाते हैं, फिर जब हम बड़े होते हैं, we're not able to do that. We're not able to go out and interact with people, and we're not able to bring out a sexual side, bring out a romantic side, a playful side, because a sense of shame is there. And society में बहुत ज़्यादा slut shaming भी होता है. And because of that, it leads to so many of these issues and leads to approach anxiety and you being sexual in and of itself. Reason number 4, why you have approach anxiety. When we're growing up, we've been teased, we've been shamed, we've been bullied, we might have been beaten up by our parents. हमें बोला गया है कि जब तुम्हारे marks आएंगे, only then you're good enough. अच्छे बच्चे वो होते हैं जो रोते नहीं हैं, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो लड़कियों से बात नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं. Basically, we've been taught to be like sheep. We've been taught conditional love, that you get the love when you're a good boy, when you don't scream, when you don't do this, when you don't do that. So parts of ourselves जो हम हटा नहीं सकते हैं, that, you know, we have the playful part, we want to be loud, we want to play, we want to go here and there. No child wants to sit at home आराम से ऐसे चुपचाप बैठा रहता है. उसके साथ साथ, and all these things combined, your sexual shaming, bullying, shaming on basis of skin color, your body, on your body weight, the way you look, उसकी वजह से we start to feel that we are not good enough, there is something wrong with me, and that leads to low self-esteem.
So when we go ahead and talk to a girl, we get anxiety because we know that I'm not good enough. If I'm not good enough, तो इस लड़की से बात करने का point क्या है? Reject ही तो करने वाली है मुझे. So why even bother? Why do I even talk to her? And if I go and talk to her knowing that I'm not good enough, मतलब मैं वो pain फिर से feel करने वाला हूँ of not being good enough, which was reinforced जब मैं बचपन में छोटा बच्चा था. And nobody wants to feel that pain again. Physiologically, we avoid facing that fear again. We put ourselves in that situation जहाँ पे हम reject हो सकते हैं. We're going to avoid that. And finally, reason number 5 why approach anxiety exists is because school में ऐसा हुआ होगा. You might have started liking someone. There may be a girl in your class or someone else's class, and you might have started liking her, and you told a friend that यार I really like this girl. अब वो तुम्हारा दोस्त इतना हरामी निकला, उसने सबको जाके बोल दिया कि भाई ये क्षितिज तो उस लड़की को लाइक करता है. और अब पूरी क्लास 50 लोगों ने मिलके दे स्टार्ट टू शेम यू, दे स्टार्ट टू टीज यू. दे लाइक हाँ क्षितिज, हाँ अच्छा वो लड़की को लाइक करता है, हॉट स्वीट पप्पी, ओके. एंड व्हेन द गर्ल वुड कम, पूरी क्लास इतना ऑकवर्ड सिनेरियो बना देती है लड़की के लिए भी और तुम्हारे लिए भी. And it makes you feel like hell. It makes you so embarrassed and you just want to disappear off the face of this world. What you're experiencing there is a very traumatic experience for you. Because you feel अगर मैं यहाँ पे ostracize हो जाऊँगा, मेरे को लोग tease करेंगे, मेरे को निकाल देंगे, और अगर मेरे को यहाँ से निकाल देंगे तो फिर मैं क्या ही करूँगा? I might just die. Alright, that's what the brain thinks. कि इसके बाहर मेरे दोस्तों ने मुझे accept नहीं करा तो भाई मैं लग ही जाऊँगा, मेरी लग जाएगी. And everybody is teasing you based on the basis of that. Like ऐसा होता होगा कि अभी भी when you meet your school friends, you tease them by the other person's name. So that's a very traumatic experience, and that basically tells you that anytime you're a romantic or your sexual or your non-platonic side, वो किसी को बताना नहीं है. कभी भी बताओगे तो shaming होएगी, trauma होएगा, लोग मजाक उड़ाने वाले हैं. But that's not true. That's not what happens now. तब हम बच्चे होते हैं. But ये हम logically कितना भी अपने आप को बता ले, that does not still translate into feeling completely fearless while we do that approach, while we talk to that girl. And that's because when the trauma happens, it gets stored in the body and in the subconscious mind. And when it's stored in the body, it gets stored in the form of sensations, pain, and everything in the memory. And we don't want to feel that again. And what we learn from that scenario is, आज के बाद कभी भी I will never tell a girl that I like her. And which is why we feel a little bit hesitant to share that with the girl. These are the top 5 reasons why you have approach anxiety. I hope you got certain things out of it. I hope this video brought you clarity. If you want to know more, if you want to do a process on how to be in touch with other blocks that you might have inside, go on the link below, ironmanlifestyle.co/private training. There are going to be 2 videos completely free. Check it out. You're going to absolutely love it. And that being said, guys, this is Kshitij signing off. Make sure you hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it, and I'll see you guys in the next video. Peace, boys.